Bismillahirrahmanirrahim. Good morning. Today it is Sunday, 20th November 2022. I hope all of my students will be healthy, wealthy, safe and sound with their families. I pray for God. Today we shall discuss logarithm. What is logarithm? The word logarithm. So for this, first of all, I remember you that it is a 9th mathematics KPK textbook, chapter 3. Or here we shall discuss the word logarithm. Logarithm is a Greek word which is the combination of two Greek words. The number one is logos, or the second one arithmos, arithmetic. Logos means to calculate the numbers. Arithmetic means numbers, numerals, etc. It means the combination of logos and arithmetics या arithmos, a sort of calculation involving the numbers. It was invented by two English mathematicians, John Napier and Napier. Maybe we can ask Napier and John Napier. It was English mathematician, Scotsman. He worked on logarithm a lot, and he discussed its addition, subtraction, division, and multiplication, etc. Later on, Henry Briggs, it was also English mathematician of London, Gresham College of London. He also worked on logarithm a lot. He derived many more and use of logarithm. So यहाँ पे हम दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है. द फर्स्ट वन इज बेस 10 which is called common logarithm, and the second one is base e, Euler constant, which is called common logarithm. लॉगरिथम के दो टाइप्स है जो कि मेरे पास पहला, अगर log विद बेस 10 हो तो मेरे पास ये कॉमन लॉगरिथम कहलाया जाता है, और log अगर विद बेस e है, which is called Euler constant. Euler was also a mathematician. We can represent natural logarithm with ln. Okay. Now, we come to the word scientific notation. Now we come to the word scientific notation. Why we use the scientific notation in mathematics? Scientific notation, if we have a large amount to reduce the use of time, to reduce the time consuming, so हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन का सहारा लेना है. मैथमेटिशियन ने इस साइंटिफिक नोटेशन को कुछ यूँ एक्सप्रेस किया हुआ है, x इज इक्वल टू a टाइम्स 10⁻n. यहाँ पे अगर मेरे पास बहुत छोटा नंबर हो या बहुत बड़ा नंबर हो, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, इसको लिखने के लिए, ताकि मेरे पास टाइम की बचत हो, और नंबर को लिखने में डिफ़िकल्टी भी ना हो, ताकि हमारे पास आसान अल्फाजों में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारे पास आ जाए और हम आसानी से इसे सीख सके, समझ सके और याद कर सके.
ठीक है, तो मैथमेटिशियन लोगों ने इस चीज़ पे इत्तेफाक किया और कोई भी नंबर जो कि छोटा अमाउंट हो या बड़ा अमाउंट हो उसको a टाइम्स 10⁻n की तरह लिखा जा सकता है। कैसे? ये मेरे पास वो नंबर है, पॉजिटिव नंबर होगा, नेगेटिव नंबर नहीं होगा, पॉजिटिव नंबर, वेदर इट इज मिनिमम और मैक्सिमम। ओके, हियर a इज अ रियल नंबर ग्रेटर आर लेस देन 1, जो कि 1 से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। सिंबॉलिकली वी कैन आल्सो राइट greater a is greater than 1 and less than 1, but less than 10 होगा, but less than 10 because here we have used the word from left to right non-zero element we put the decimal point. We shall discuss later. Here n is the integer. Here n is the integer. We can also draw the integers on a real number line like 0, 1 positive number, 2, 3. All these numbers have a space of positive 1 consecutively. Okay, here negative 1, negative 2, difference of negative 1, difference of negative 1. आगे हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि why we use the integers on a real number line. Now, definition of a log. We can write the log into two forms. E raised to power x is equal to y, that is the exponential form. Log with base a of y is equal to x, it is a logarithmic form. You can see from this page. Now, it is the symbol of if and only if. It means कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इसका हो सकता है कि log को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे तो इसका हम रिवर्स भी कर सकते हैं, log विद बेस ए ऑफ वाई, एंड अगर हम फिर वापस इसको रिटर्न करें तो ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो ये इफ एंड ओनली पोजीशन हमारे लिए इस्तेमाल हो सकता है। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म मेरे पास ऐसे होगा, अगर कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे 4⁴ इज इक्वल टू 256, ये मेरे पास आंसर ओके हैं कि इट मीन्स इंडेक्स या एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें बताता है कि 4 को 4 टाइम्स अब मल्टीप्लाई करे, 4 को अपने साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करे, इट मीन्स 4, तो 4 मल्टीपल 4 मल्टीपल 4 मल्टीपल 4, तो ये वन सेकेंड 256 दे रहा है। तो अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा 4⁻256 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल से लॉग में आना और लॉग से एक्सपोनेंशियल में जाना, और यहाँ पे हम लॉग पुट कर लेंगे, लॉग विद बेस, नो सॉरी, क्लियर है, log with base 4 of 256 is equal to 4. Clear है? It's okay. Secondly, if we have logarithmic form of any number, let's suppose log with base 2 of 1 over 128 is equal to -7, change into exponential form, then 2 raised to power -7 will equate to 128. This was the definition of log and its form, logarithmic form and exponential form, and it was just two example जो आप लोगों के समझ में आ चुके होंगे।
Now here we shall discuss two questions. Exercise 3.2 9th मैथमेटिक्स है KP की टेक्स्ट बुक है. Question number 3. If you will how to find the unknown, whether it is x, y, z, then how we will have to find it. For this, first of all, we have discussed recently if we have given the logarithmic form, then we will have to change the exponential form it, or if we have given exponential form, then we will have to change it in a logarithmic form. So by means of this we can find the unknown x. Here question number 3. Log with base under root 5 125 is equal to x, which is a logarithmic form, or we shall change it into exponential form. Here e raised to power x is equal to y. E raised to power x is equal to y. This is a logarithmic form and this is its exponential form. Now here e raised to power x means under root 5 raised to power x हो जाएगा और इज इक्वल टू 125 हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या है साइंटिफिक नोटेशन से हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया. नाउ वी हैव रेडिकल साइन इज इक्वल टू मेरे पास क्या होता है 121/2 होता है. Here if we have a cubic, then 1/3. If we have n up to so on whole raised to n, then we have 1/n. Clear है. तो 5 raised to 1/2 that is power rule. 1 x by 2 हो जाएगा, और 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 multiple 5. By means of exponential law, if we have same bases in product, then we can add the exponent. So 1 plus 1 plus मेरे पास 3 बन जाएंगे. Here bases are same, then power will be called equal by means of exponential laws. Here we have e raised to power m, here we have e raised to power n. So m और n भी आपस में equal हो जाएंगे. So because of this property, that is the symbol of because. ये जो x by 2 इक्वेट मैंने किए 3 के बराबर, तो ये मैंने इस उसूल के मुताबिक सिंस एंड बिकॉज डिवाइड टू. नाउ हमारे पास इक्वेशन के एक साइड पे अगर मेरे पास कोई कांस्टेंट है जो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, तो अपोजिट साइन से दूसरी साइड में हम उसको हटा लेते हैं. अब चूंकि मेरे पास डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई. क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, 2 ऑन बोथ साइड. तो जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इस साइड से इस साइड से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे मुझे 6 दे रहा है विच इज आवर आंसर. क्लियर है. सेकेंडली इफ वी हैव अनदर एग्जांपल, एक्सरसाइज 3.2 9th मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 3 7th पार्ट है मेरे पास. हियर इफ वी हैव गिवन अ स्टेटमेंट log with base x 0.001 is equal to -3, then it is a logarithmic form. First of all, we will have to change it into exponential form. Let's see. X raised to power -3 equate to 0.001, और log को हम रिप्लेस कर लेते हैं. That is logarithmic form and change into if and only if condition. e raised to power y is equal to x. अगर ये पोजीशन एक्सपोनेंशियल तो log में आओ, log वाला है एक्सपोनेंशियल में आओ. अब हमारे पास अननोन आ जाएगा. Here let's see. Now x raised to power -3, we can write the decimal number into a common fraction. Like if we replace the decimal point, so by means of denominator 1, मेरे पास decimal place क्या हो जाएगा यहाँ 1 में चेंज हो जाएगा, और इस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जितने भी नंबर्स है वेदर दे आर जीरो आर नॉन जीरो एलिमेंट, तो सब की जगह मैंने क्या करना है यहाँ जीरो काउंट करने हैं. ठीक है. दैट इज़ 1 2 3, तो 3 नंबर मैंने काउंट कर लिए, और यहाँ ये मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं रहे क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट ख़त्म हो गया, तो इस साइड पे ये जीरोस का
कोई मीनिंग, कोई मतलब, कोई वैल्यू नहीं बनती थी, इस वजह से मैंने 1 ही लिखा। क्लियर है? तो 1000 है मेरे पास, ये 10 मल्टीपल 10 मल्टीपल 10, ये हम ऐसे लिख सकते हैं, सेम बेसिस है, इनके पावर ऐड हो जाएंगे। क्लियर है? 1/10 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा। नाउ बाय एक्सपोनेंशियल लॉ 1/e रेज़ टू पावर x, जब नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर में जाओगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, या डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में या नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर में आओगे तो आपके पास एक्सपोनेंशियल का जो साइन होगा, इंडेक्स का जो साइन होगा, वो आपके पास चेंज हो जाता है। क्लियर है? नाउ बाय मीन्स ऑफ अनदर रूल, e raised to power m is equal to b raised to power m, then bases are different and power are equal. So by definition we have x raised to power -3 and 10 raised to power -3. So -3 are same. On comparison, x is equal to 10, which is our answer. So my dear student, आज का ये टॉपिक इख्तिताम को जाता है। उम्मीद करता हूँ कि 3.1 3.2 आप लोग आसानी से कर चुके होंगे और आसानी से आपको समझ आ जाएगा इसी लेसन को पढ़ते हुए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।